एंड वी हैव एक बच्चे ने बोला ही इज एमबीए, तो मुझे एमबीए की बात याद आई. साउथ अफ्रीका में देयर इज वन कंपनी, आई विल नॉट नेम दैट कंपनी, बट फ्रॉम दैट 10 एमबीए फाइनेंस पीपल, दैट एम्प्लॉयर हैज टोल्ड देम कि आपको सीएमए यूएसए करना पड़ेगा, एंड दे हैव परचेज्ड लेक्चर्स फ्रॉम अस only because IMA has a franchisee with that employer, and now employer is forcing that employees that you should also get the knowledge of CMA USA. So you see how much they are aggressive, how much they are very much worried about the placement after doing CMA USA. तो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला, this journey will be, placement will be good, आपकी लाइफ, आपको प्रॉस्पेरिटी, नेम. आपने सुना होगा हिंदी में, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी. एक विद्या एक ऐसा धन है जिससे सारे धन आ जाते हैं आपके पास. मेरी बात आप, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस श्लोका यू आर गेटिंग पॉइंट. जो मैं कह रहा हूं आपको, विद्या ददाति, विद्या से ये मिलता है, फिर उससे ये मिलता है, फिर उससे ये भी मिलता है, और लास्ट में लक्ष्मी जी मिल जाती है. और लक्ष्मी जी से बी हैप्पी, बी चेयरफुल, बी जॉली, सब कुछ मिलेगा. ठीक है जी. Any other? So let's start with the session. Any other? Yeah, Lizzo, you want to share something about yourself, please share. Hi everyone, my name is Lizzo. I'm basically settled in Pune. Great. So recently I heard about this CMA course. So currently I work at Tata Communications. So I thought for better both opportunities. Okay. So whether you are watching my YouTube lectures or whether you have purchased my lectures or not? So I have purchased the first part 2 sections. Okay. So how many sections you have covered from that? Sir, I have completed this DE. And okay. I've gone through all your lectures, so I completed that. Okay. So these will be the, okay, great to see you. Great to see. Any other experience you want to share? Please share with these people, We are starting live batch 2, We have already completed live in the last month and now we are starting the second batch. So anything you want to share? कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो बताइए बच्चों को. कुछ भी एक्सपीरियंस, जो भी आपको जो लगता है सीएम में क्या है, यू वांट टू डू इट, आपको क्या लगा अपॉर्चुनिटीज, और अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है पढ़ने में आपको जो भी फील हुआ. एक्सपीरियंस ये है कि सर मतलब आपके लेक्चर्स द वे यू मतलब टीच, मतलब जो जैसे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा. So that's the reason I have joined your course. Second thing, as a career opportunity, this course I think is really important. Great. Because क्योंकि ये कोर्स है कि जो नीचे लेवल के लोग और जो ऊपर लेवल के लोगों के बीच में एक हमको रिपोर्ट जो जनरेट करके देना पड़ता है मैनेजमेंट को. Great. Very right. You are right. You have rightly explained that. Very good. So what about your doubts, while doing that section B or E, which you have just told that you have already done that. So whether you have practiced from Hawk, because मैं आप सबको बता दूं, we are the Hawk partners. We are recognized partners by Hawk, and we generally promote Hawk. But you can do from Wiley, Glam, Becker, Hawk also. But हम Hawk के partner हैं. So whether you have tried LMS of Hawk, Lizzo? Yes, sir. I have tried that. Okay. So how many questions you able to do in the first attempt? Sincerely, you have to tell that. Sir, to be honest, मैंने सिर्फ ये अपने एथिक्स के मैंने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं और रिस्क मैनेजमेंट के ट्राई किए हैं, और उसके अलावा उसके मतलब हार्डली 40% आई हैव ट्राइड दैट. ओके. तो अभी आपको क्या करना है, जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, जैसे आपने बोला दैट यू हैव कवर्ड सेक्शन बी, so firstly you should do that unit, you should see the textbook of that Hawk, and then you have to go over LMS of Hawk. Nothing more than that and nothing less than that. जो यूनिट आप देख रहे हैं उसी को देखना है आपने LMS में. You are getting my point? Yes sir. हाँ. तो ऐसा आप, because ethics और risk management is different sections, and you have just told that you have seen section B and section E, that is investment and that is working capital. तो आपको accordingly चलेंगे तो ज्यादा एक अच्छे रिजल्ट आएंगे. Ultimately you have to do all, but the point is you have to follow that process. जैसे मसाला डोसा बनाना हो तो एक प्रोसेस है ना, तभी मसाला डोसा बनेगा, है ना. पुणे में भी मसाला डोसा, दिल्ली का मसाला डोसा, there is a process of मसाला डोसा. तो you have to for some time you have to follow the process. उसके बाद तो जैसे मर्जी कर लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. ठीक है. अभी इन लाइव लेक्चर्स में मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको.
मैं रिविजनरी कराऊंगा आपको पूरे सेक्शंस का. आई विल बी डिस्कसिंग विद द रिवीजन, आई विल बी डूइंग विद द रिवीजन. पहली बात, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे एलएमएस, बिकॉज वी आर द पार्टनर्स. तो मैं एलएमएस भी ओपन करूंगा, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन केस यू हैव एनी पर्सनल डाउट, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे लास्ट 15-20 मिनट्स में. बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू catch with all the questions, you can fix with me a special Google Meet session. My team will help you and we will fix up that. तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना सेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. आप सभी अपना रजिस्टर्स पहले अपने साथ रख लें प्लीज. रजिस्टर्स रखें, नोटबुक्स, और एज द केस मे बी. माय पॉइंट इज, life is very short and we have to live like anything. So my great morning to all of you. No doubt this is 6 o'clock, 6:15 p.m. but I always say great morning, great morning, great morning, because when I say great morning, a new type of command goes to my mind that there is something more to do today. I have to do more. I have to conquer the world. आप किसी को बोले गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मॉर्निंग में भी, तो एक कमांड दे रहे हैं माइंड को कि अभी हो गया सब, बस ठीक है. जो बिकॉज एनर्जी लेवल कम्स डाउन. इफ यू वॉच माय लेक्चर्स, देयर इज अ ह्यूज एनर्जी लेवल, बिकॉज आई ऑलवेज फील गुड मॉर्निंग. तो आप अपना रजिस्टर निकालें प्लीज सभी बच्चे, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल लेक्चर यार. मैं रिविजनरी आपके लिए आया हूं, सो दैट आई कैन गिव यू मोर देन दैट विच यू एक्सपेक्ट. तो CMA USA Part 2 examination, as you are all aware of, there are two parts, Part 1 and Part 2. You can complete within 9 to 12 months or within 6 months also, but I generally recommend you can do within 9 to 12 months easily. Whether you're a commerce background or whether you're a non-commerce, it hardly matters. Whether you are intelligent or not intelligent, it hardly matters. Whether you are doing job or not doing job, it hardly matters. What matters is your intention to get something. Whosoever wants to sing a song can find a song. जो भी गाना गाना चाहता है उसको गाना मिल जाता है. वो गाना ढूंढ लेता है, रीजंस नहीं देता. ये नहीं किया तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कुछ पाना है तो आपको मिल जाएगा. For getting something, you have to lose something. So my dear friends, I am starting with my beautiful lectures. And the part 2, the part 2 which I will be doing with CMA USA Part 2, उसका IMA ने नाम रखा है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है. एवरी डे पुतिन और द कंसर्न ऑफिशियल, दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज कि आज यूक्रेन में कहां लड़ाई करें, आज कहां पे बम्बार्डमेंट करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द रणनीति. एंड यूक्रेन इज आल्सो फॉलोइंग स्ट्रैटेजी. मैं अगर आपको पुराने जमाने में लेके जाऊं, महाभारत के जमाने में भगवान कृष्ण और अर्जुन, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, 18 दिन की लड़ाई थी, रेगुलरली भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा used to say that I will not pick up any weapon. Yes, I will prepare a strategy for you. मैं आपके लिए रणनीति बनाऊंगा. So as a management accountant, what you want to become, you will be helping that company, you will be helping that corporate entity to prepare the strategies. You will be helping Mukesh Ambani, you will be helping Ratan Tata, you will be helping Narayan Murthy, you will be helping Sunil Bharti, you will be helping Ramdev Baba in Patanjali, that how to use the funds effectively. What are the decisions to be taken into account? How to manage that funds? और वो स्ट्रैटेजी रेगुलरली चेंज होती जाएगी. यू कैन नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. आज बना दी 10 साल यही चलेगी. कोविड-19 का सिनेरियो कैसे बदल गया यार. कितनी ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो गई, कितनी नई आ गई, सारी कोचिंग ऑनलाइन में आ गई. एवरीथिंग इज चेंजिंग. लाइफ चेंज होती जा रही है, आपकी थॉट्स चेंज हो रही है. एवरीथिंग इज चेंजिंग यार. योर फेस इज चेंजिंग, your physical feature is changing. So similarly, you cannot have a one long term strategy. It is again to be, it is varying like anything. So मैं आज उस that name of that is strategic financial management. So this is, I will say, it is a sum total of 3 words: strategy plus financial plus management, and there are 6 sections as per IMA.
आप नोट करते जाना, जो बच्चे, दोज हु हैव नॉट परचेज्ड माय लेक्चर्स एंड दोज हु हैव परचेज्ड, अभी टाइम लगा ही रहे हैं तो यार खाली बैठ के क्या करना है, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, देखो टाई भी लगाई है, आपको टाई दिख रही होगी, खड़े होके पढ़ा रहा हूं यार, आप तो बैठे हुए हैं, और आप में से कुछ बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ बच्चे हैं। यू हैव टू सिट डाउन, यू नो, और जस्ट नोट डाउन दीज, देयर आर 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन एज पर IMA इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेक्शन ए। That what I mean by financial statement, it is just like a report card. जब आप छोटे से बच्चे थे, आप you generally give the examination, terminal examination, half yearly, annual examination, and your class teacher gives an annual report card. आपके पेरेंट्स जस्ट रीड कि वो पढ़ते थे कि आपके कितने मार्क्स आए, एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस 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 दिस, व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट आर यू डूइंग, एंड विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट कार्ड यू दे कैन गेट एन आइडिया कि हमारा बच्चा, बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे आर डूइंग इन द स्कूल। Similarly, management accountants, they are responsible, you know, for financial statement analysis. They are not to prepare financial statements, but उनको पता तो होना चाहिए कि financial statements बनाते कैसे हैं, how to prepare it, how to analyze it. एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, आप बताइए, पेशेंट कहता है सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर क्या करता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है, आपका ये कैसा है, आपको रात को नींद आई, व्हाट डू यू लाइक दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड ही आस्क्स फॉर सम टेस्ट, एंड देन ही एनालाइज कि कहीं कोविड तो नहीं है, कहीं वायरल फीवर तो नहीं है, नथिंग डूइंग, इट इज फाइनेंशियल, इट इज एनालिसिस। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है सर, as this is a financial statement analysis. Second part, section B, आप सब लिख रहे हैं, you are noting down, please don't take it as a normal YouTube lecture. This is corporate finance. As a management accountant, you have to see from where I can get the funds, whether I should issue common stock, whether I should go over equity, whether I should go over debt, whether I should go over commercial paper, what are the sources of funds, from where I can get that funds, what is working capital, what is accounts receivables management, what is cash management, बेटे ये all that इसको हम कहते हैं corporate finance. Section C, decision analysis. आप लाइफ में रेगुलरली डिसीजंस लेते हो, as you may be working in a BPO, you may be working in a MNC or in a Big Four or in any company, every person is taking decisions, even a small rickshaw wala is taking regular decisions. So as a management accountant, as a CMA USA, you have to take so many decisions regularly यार। आप एक छोटी छोटी बात के लिए डिसीजन लेते हो कि ये मेट्रो लूं या नेक्स्ट मेट्रो पे लूं, whether I should go over Lakshmi Nagar or whether I should go over Vaishali Noida. So as a management accountant, you have to take decisions, make versus buy decisions, shut down, continue decisions, which products to be produced, whether A to be produced or not, expansion is my decision or not, what is my limiting factor. Regularly जाने में you always use this, my dear friends. Now as a CMA USA, as a qualified member, you have to take so many decisions. So that we will be covering in section C. Section D, risk management. COVID-19 सिनेरियो के बाद रिस्क मैनेजमेंट हैज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेटे रिस्क इज देयर। आप ये बताओ, कोविड-19 से सेव होने के लिए देयर इज एक्सपोजर, बट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। तो क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे, डोजेस लगवाएंगे या डिफरेंट प्रिकॉशंस लेंगे। रिस्क तो होगा, कुछ नया वायरस आ जाएगा कोविड के बाद, कुछ थर्ड वेव, फोर्थ वेव, भगवान ना करे आए। But the point is, you cannot control the outside environment, but you can hedge yourself. That hedging is the task of management accountants. Foreign exchange risk management. आप चेक कर रहे हैं रेगुलरली डॉलर रूपी का चेंज आ रहा है। Regularly after Russia Ukraine war, there's a huge prices in, you know, there's a change in the prices in petroleum. So you have to hedge. Hedging दो तरह की होती है दोस्त, इंटरनल हेजिंग एंड एक्सटर्नल हेजिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सलमान खान
आजकल बुलेट प्रूफ कार में जा रहा है, बिकॉज उसको कहीं से कहीं कह रहे हैं ये मार देंगे वो मार देंगे. इट मीन्स इट इज ए एक्सटर्नल हेजिंग. आप समझ रहे हैं वेदर यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट? यस और नो तो बोलिए, प्लीज से यस और नो. Yes, sir. एंड द नेक्स्ट सेक्शन जो हम करेंगे वो सेक्शन ई है. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, whether it is important to do, it is important to start with a new project or a replacement or not. And last is ethics. धर्मो रक्षति रक्षता. आप जब तक धर्म की रक्षा नहीं करेंगे आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा. एथिक्स की बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे. तो these are the 6 sections of CMA USA Part 2. मैं आगे चल रहा हूं सर. There are 6 sections, 17 units. 17 units मान लेते हैं, 17 chapters. 500 मार्क्स का पेपर है. आपकी पासिंग परसेंटेज है 72%. आपको लाना है 360 मार्क्स, 100 MCQs, 2 essay टाइप. भूपेश आनंद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा सकता है अगर आपने अपना खून दे दिया. मुझे खून दो. आई विल बी गिविंग यू द लिबर्टी अमृत महोत्सव, 75 years अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव. अब खून कैसे देना है आपको, मैं जो कहता हूं, यू हैव टू नोट इट डाउन. Then only you can give me blood. I want your blood so that I can give you independence. From this, I will give you financial independence. And for that, you have to give some blood and you have to note down these slides. ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं. देखिए फ्लो चार्ट में बॉक्सेस कितने हैं. एक तो बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, सेकंड, थर्ड बॉक्स ये है, फोर्थ बॉक्स ये है. ये बॉक्स ये अभी हमने बनाया नहीं, मैं बना देता हूं. आप सभी को प्रिपेयर करना सर. whether you have purchased lectures or not, it hardly matters. I again repeat. जल्दी से मैं आई एम गिविंग यू टाइम. एक बार आप बनाइए. मैं आज आपको बताऊंगा पैसा कैसे कमाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. अभी मैंने बताया नहीं व्हाट इज स्ट्रैटेजी. आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज फाइनेंशियल. आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज मैनेजमेंट. मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूं कि है क्या ये सब कुछ. व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी. व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी. कैन यू टेल मी एनी वन ऑफ यू प्लीज. आप मेरे को बता सकते हैं, बिकॉज अभी हम जो कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रैटेजिक प्लस फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट. I am doing these 3 words. The sum total of these three is named as CMA USA SFM. So any one of you please, what is the meaning of strategy? Please tell me something about strategy. क्या लगता है स्ट्रैटेजी है क्या? क्या बोलते हैं रणनीति? What I mean by strategy? हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, कुछ अपनी व्यूज देना चाहेंगे? प्लान. बोलिए बोलिए. प्लान सर. Best Plan. course of Okay. action. So Anyone it's हाँ जी. like Best it's like taking decisions based on evidence and Great. Taking decisions based on evidence. Okay. Best और course बताइए. of action. हाँ जी, Best course of action. बढ़िया. बेस्ट कोर्स. मेरे एक दोस्त ने बोला बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. बहुत ही बढ़िया बताया. इट मीन्स यू आर अवेलेबल विद डिफरेंट कोर्सेस. आप बचपन में पेपर देते थे तो आपके क्वेश्चन पेपर मिलता था. यू रीड दोस क्वेश्चंस. अच्छा, जैसे आप पढ़ते थे पहले 5 मिनट में पता चल जाता था दैट वेदर यू विल बी एबल टू डू दैट और नॉट. क्या आपको आता है या नहीं. ये हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर अवेयर ऑफ एंड हाउ मेनी यू आर नॉट अवेयर ऑफ. तो आप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते थे. प्लान अचीव पहले गोल्स. हाँ, पहले कौन सा क्वेश्चन दूं, फिर प्लान कौन सा अचीव क्वेश्चन. गोल्स. हाँ जी, प्लान अचीव बोलिए. गोल्स सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो इट मीन्स फॉर गेटिंग समथिंग देयर आर. आपको यहाँ पे जाना है, सपोजिंगली कुतुब मीनार जाना है. कुतुब मीनार, आई वांट टू गो टू कुतुब मीनार. हमारी दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है जी.
अब कुतुब मीनार है, मैं रहता हूं पटेल नगर में रहता हूं। सपोज करते हैं कुतुब मीनार के ये भी वे है, दिस इज ऑल्सो द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे, एंड देयर आर डिफरेंट वेज फ्रॉम वेयर आई कैन गो टू कुतुब मीनार। बट कुछ वेज में रेड लाइट ज्यादा है, कुछ लेंदी है, कुछ छोटे हैं, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी। इट मींस आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट is the best course of action within short span of time I can reach this Qutub Minar. It means the point is मेरे पास vision है, I have a vision, I want to do this, I want to achieve this, this is the vision, or I will say this is the mission। मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं, आप सबका लाइफ में विजन मिशन जरूर होगा। लिजो आपका क्या मिशन है लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू बी, यू नो, आफ्टर 5 years डाउन द लाइन क्या कहना चाहते हैं, दुनिया कैसे कहेगी कि लिजो यस, लिजो हैज डन समथिंग, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट इज योर मिशन इन योर लाइफ। हाँ भाई लिजो बोलिए सर प्लीज। लिजो अच्छा, any other person who wants to share that this is my vision? Successful management accountant. अच्छा, you want to become a management accountant. अच्छा, after that vision क्या करना चाहते हैं आप? अच्छा, ये मालूम है कि आपको लाइफ में there is a vision, there is a mission, and there are different courses of actions to achieve that mission. तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं strategy is, आप लिखें strategy, सब बच्चे लिख रहे हैं, you know, you have to write down at least 1 or 2 lines. Strategy is the objective. Very right, best course of action to achieve your goal or objective। सभी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, यू नो, यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको ना बच्चा बनना है, जब तक CMA USA क्लियर नहीं हो जाए, स्कूल बॉय बन के दिखाना है, स्कूल गर्ल बनना है, आपको होमवर्क करना है, मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा उसको अटेम्प्ट करना है, नोट डाउन करना है, फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसको लिखना है, एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इट डाउन, यू नो, so you have to become like a child। so when I say strategy, when I say write down, you have to write it down। strategy means the best course of action to achieve your goal or the objective। what is the meaning of management? कौन सा बच्चा बताएगा what I mean by management? ये तो सबने सुना हुआ मैनेजमेंट। हाँ जी प्लीज शेयर। देखिए भैया प्लीज बोलिए। Effective and efficient utilization of available resources to achieve your goals. ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी लिखना नहीं है, अभी लेट द क्वेश्चंस आंसर कम, उसके बाद देखेंगे। एनी अदर आंसर यू वांट टू शेयर, व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैडम कह रही थी अभी कुछ, मैडम एनी आंसर यू वांट टू शेयर रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट? Management is the science and art to get the things done from people. Very right, very good answer you have given. It is a science and art of getting things done through others. Running and controlling similar business organization. Great. It means management has some 5-6 functions: planning, organizing, controlling. Very right, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप सब। Any other thoughts in regard to management? तो आप सबने बड़ा अच्छा शेयर किया है, बिल्कुल राइट है। मैं आपके सामने आई एम अगेन राइटिंग डाउन अ डेफिनेशन व्हिच यू हैव टू राइट इट डाउन in you must have listened this definition, you know, in your school days or in the college days. Effective and efficient utilization of men, money, machine, material, those 5 M's to achieve the objective of the organization। if I just say management, तो मैनेजमेंट का मतलब आपने ये सुना हुआ है, बताओ यस या नो। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ 5 M's, बोलो सुना है या नहीं? Yes, sir. तो यहां लिखेंगे
इफेक्टिव, एक लाइन लिखेंगे सर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन of 5 M's, that is men, money, machine, material and manpower to achieve organizational objective. But I want to become a management accountant. I want to manage the funds. I'm not to manage men. I'm not here to manage material. I'm not here to manage machine. So I want to manage funds. And when I say funds, it does not mean money. Because after demonetization, 2016 के बाद अगर आप देखें तो funds का meaning कुछ अलग आ गया. It means soft funds. It means bullion. It means marketable securities. It means Paytm balance. It means, it means hard cash. It means as a management accountant, I want to only manage funds. मेरा जन्म ही फंड्स को मैनेज करने के लिए हुआ है. तो मैं अभी आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको सभी को लिखना है. दैट यू हैव टू राइट इट डाउन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हेन आई से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, When I say financial management, तो आप लिखेंगे it is effective and efficient, as my friend told us, and efficient utilization of funds in order to achieve objective of maximization. अभी देखेंगे what is the meaning of this, but I want to write down maximization of wealth. It is not the profit which I want to maximize, my dear friends. आपके एग्जामिनेशन में अभी स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन आया था whether the objective is to maximize the profit or whether the objective is to maximize the wealth. My dear friends, your objective is not to maximize the profit, rather your objective is to maximize the wealth of the company. Now how it can be maximized वो मैं बताऊंगा, but आप just पहले definition लिखें. Financial management, it is effective and efficient utilization of funds in order to achieve the objective of maximization of wealth. चलिए जी, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं सर, आप सब मेरे साथ साथ बनाएंगे so that we can get an idea. But I want to say I think you must have prepared these boxes. ये बना लिए सभी ने? Yes या no बोले, बनाया नहीं? Whether you are prepared or not? Yes या no कहें? सर नहीं Yes, बना sir. है, लेट ज्वाइन हुआ था. चलिए यहां पे लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंस स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देखिए आज फर्स्ट क्लास में मैं इंट्रो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो बाकी सेक्शंस है ना, ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड आई वांट टू से कि ये इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे आई विल बी डूइंग द कोर्स. मैं आज स्टार्टिंग ही कुछ चैप्टर से शुरू कर दूं एंड यू आर नॉट अवेयर बिकॉज यू हैव नॉट यू आर नॉट अवेयर द फुल सिलेबस. तो हाउ यू कैन गेट एन आइडिया. आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा. बुर्ज खलीफा को का फाउंडेशन बनाने में टाइम ज्यादा लगा, ऊपर फ्लोर तो जल्दी बन गए यार. तो आई वांट टू बिल्ड योर फाउंडेशन टुडे. और मैं आज आपको कुछ ये बताना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की. फाइनेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ फाइनेंस. आइए मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बता दूं. कैटरीना कैफ कुछ कह रही है, आपको उसी पैसे को मैनेज करना है, फंड्स को मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, बुलियन को. यू हैव टू मैनेज. जस्ट हैव अ लुक ऑन कैटरीना कैफ. यस, वो
कह रहा है ये पैसा पैसा करती है, फंड्स फंड्स करती है, सीएमए यूएसए के पास चली जा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास चली जा, ही विल टेल यू हाउ टू गेट दैट फंड्स, फ्रॉम वेयर द फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, फ्रॉम वेयर टू यूज इट. All those questions will be answered by a management accountant, by a CMA USA qualified member. So let's start with the journey कि अभी हमें करना क्या क्या. आइए सर, आइए, let's start. मैं भूपेश आनंद आपके साथ एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट सी शेयर कर रहा हूं. आप सभी ने अपने रजिस्टर्स में बनाना, तभी हम कैटरीना कैफ को भी पूरा देखेंगे. ऊपर हेडिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो अभी अभी ना वी हैव सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. तो मैंने बॉक्सेस में छोटा छोटा लिखा है, आपने छोटा छोटा लिखना है. फर्स्ट बॉक्स ये वाला है जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं. सिलेक्टिंग 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 ऑप्टिमम. ऑप्टिमम ऐसे तो बड़े, देयर आर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, यू नो देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल. So it depends upon you whether you want to have a South Indian, whether you want to have a Chinese, whether you want to have Thai, whether you want to have North Indian, whether you want to have Rajasthani, which type of flavor you are liking for that, and you follow that strategy. So when I say a strategy, it means selecting optimum course of action out of bundle. Out of bundle, उस बंडल में से, दादी जी की पुड़िया में से एक ऑप्टिमम कोर्स निकालना, उसका नाम है स्ट्रैटेजी. आप नीचे लिख रहे हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकंड बॉक्स, जल्दी जल्दी लिखेंगे. सेकंड बॉक्स आंसर लिख रहे हैं, लिखो. यू हैव टू राइट इट डाउन. आई हैव जस्ट टोल्ड यू मैनेजमेंट. अभी मैं एक आपको मूवी दिखाने वाला हूं, गरम मसाला, और उसमें ये दिखाऊंगा कि हाउ जॉन इज इज मैनेजिंग दोस गर्लफ्रेंड्स. सारी की सारी ऑल आर वर्किंग इन एयरलाइंस एंड हाउ ही इज मैनेजिंग. सो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. मैं एंगर मैनेजमेंट की बातें भी नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लाइफ मैनेजमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एंगर मैनेजमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट. आई एम टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आप लिखेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. Funds, Katrina Kaif, funds. I can effectively and efficiently manage those funds if I can answer these 3-4 questions. अगर आप मेरे 4 क्वेश्चंस का आंसर दे दें, तो 6 के 6 सेक्शंस, I have linked in these 4 questions, and you will get an idea कि पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए. बाकी सब टीचर्स पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, सेक्शन ए से शुरू कर देते हैं. Now which section you should start with, and you should be aware of that. The first question is, what is the requirement of funds? What is the requirement of funds? Second question is, how to procure those funds? पैसे क्यों चाहिए, कैटरीना को क्यों चाहिए? अच्छा, वो आएंगे कहां से? Question number 2 is, question number 3 is, how to assess the risk after COVID scenario. How to assess the risk? What is foreign exchange risk? What are derivatives? What are futures? What are options? What is the risk? And last is, what are professional ethics? It is sabhi. You have to write down these 4 questions. If you can answer these 4 questions, you can become a good strategic financial manager. If you can become a good strategic financial manager, you will be effectively using that and you will be achieving the objective of the organization. जो मैं आ रहा हूं, अभी आप पहले बताओ, ये चारों क्वेश्चंस लिख लिए क्या सभी ने? Yes or no तो बोल दो. Yes, sir. Yes, sir. तो इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप में से 3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या लेट के पढ़ रहे हो क्या? टेबल चेयर में बैठ रहे हैं, मैं खड़ा हो रहा हूं, देखो. So you have to write down these 4 questions. After that, to answer these 4 questions, मैंने 4 आंसर्स ले लिए आपके सामने. Answer number 1 for answering question number 1, answer number 2 for answering question number 3, 2, answer number 3 and answer number 4. All 6 sections I have cultivated, accumulated in these 4 answers, which are interlinked. आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लेते हो. यू टेक जनरली फर्स्टली कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें या नहीं. रतन टाटा
रतन टाटा जी ने पहले प्लान किया कि ही वांट टू गो फॉर अ नैनो। मुकेश अंबानी ने पहले डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट का दैट ही वांट्स टू गो फॉर रिलायंस जियो। तो फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सेकंड स्टेप इज फाइनेंशियल डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है, आंसर नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन 2 सेकंड स्टेप, आंसर 2। इट मींस आपको पहले इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, फिर फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू मैनेज द रिस्क एंड लास्टली यू हैव टू गो फॉर एथिक्स। तो फर्स्ट में आप 4 एरोज बना दीजिए नीचे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, रिस्क एंड एथिक्स। मैं आ गया जी इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखना है आपने। There are 2 types of investments. One is short term and second is long term. Short term का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। सेक्शन बी में कवर्ड है ये आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, और लॉन्ग टर्म इज कवर्ड इन सेक्शन ई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विच आर कैपिटल बेटिंग डिसीजंस, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सी चीज कहां दी हुई है, आप उसका लिंकेज बना पाओ, तब तो पढ़ाई होगी। इन्वेस्टमेंट में लिखे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म में लिखे कैपिटल वेटिंग एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। इसमें यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे, इवन आई हैव रिटन द यूनिट्स आल्सो। कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कैपिटल वेटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, दैट इज कवर्ड इन। अच्छा, कैपिटल वेटिंग है सेक्शन, this is second point which I will be covering. This is section E. It means आप देखो कुछ पार्ट उन्होंने सेक्शन बी में एक यूनिट में दे दिया, उसका इंटरलिंक सेक्शन ई में है, और आपको पता ही नहीं कौन सी चीज पहले करनी है, बस करते जा रहे हैं। यू आर डूइंग बिकॉज यू हैव टू डू सीएमए यूएसए। ऐसे कैसे यार, 2 बार यू हैव टू पे 2 times एग्जामिनेशन फीस। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पास होना है तो आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। इट मींस आप सभी इस समय लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके 2 पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आप बताइए सीएमए यूएसए आपके लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन है या शॉर्ट टर्म है? एनी वन ऑफ यू प्लीज, whether it is a long term decision or whether it is a short term decision, any one of you please answer it. Sir, it's a long-term Short-term, sir. decision because we are making a choice of making a career as a management accountant. Great. Any one of you other than that, other than this person, why it is a long term? CMA USA, joining a CMA USA is why it is a long term. Sir, because it's a non-recurring expense which we are making for our career. It means there are some features. Yeah. हाँ जी, share करें, बोलिए. Please. It is a global recognition, sir. Okay, it is a global recognition. Very right. It means आपने ना बचपन में एक बात सुनी थी, recurring expenses, recurring, and there are some expenses which are named as non-recurring. When I say recurring, it means they will be incurred in day-to-day life. Regularly होते ही रहेंगे day to day. But if I say non-recurring, I will say they are capital expenditures. I will say they are, they are long-term investments. For example, CMA USA, joining a CMA USA is a long-term because it involves huge sum of money. It is irreversible in nature, क्योंकि आपने ना अपने घर वालों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी कंपनी में सबको बता दिया कि आप सीएमए यूएसए कर रहे हो। वैसे बताना चाहिए था ही नहीं, क्लियर हो जाता तो आफ्टर दैट यू कुड हैव टोल्ड। बट अगर आपने अब रिवर्स कर दिया ना, तो इट विल अफेक्ट मार्केट प्राइस, इट विल अफेक्ट मार्केट प्राइस। इट मींस फॉर रिलायंस जियो, Bhupesh Anand, starting Jio is a long-term investment because huge funds are involved. Because once they have taken the step, they cannot reverse it. Reverse करेंगे तो market price of Reliance Group will be affected. So CMA USA is a long-term investment. Similarly, as a management accountant, you have to take so many long-term investment decisions for your company. Whether to replace the old machinery or not, whether to go for merger amalgamation or not, whether to start with a new product or not.
whether to, you know, there are so many things, ऐसी बड़ी सारी बातें होंगी जो आप अपनी कंपनी के लिए which you have to take, which are have the longer aspect, long term aspect, and which have these three features. So this we will be covering in section E. ये हम कवर करेंगे सेक्शन E में. And this I will be covering. This is named as working capital, current assets minus current liabilities. When I say current assets, I mean cash, I mean accounts receivable, I mean accounts payable. It means I want to manage this, I want to manage this, I want to manage this. तो ये सब कहां पे कवर्ड है? यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 4 सेक्शन बी. आप देख रहे हैं सिलेबस तो सारा इंक्लूसिव किया उन्होंने, बट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप थोड़ा सा गलत कर दिया. तो भूपेश आनंद का जन्म हुआ और आप सबके लिए आ गए कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या क्या करेंगे. अब आप उसी फ्लो चार्ट में रहें, उसी फ्लो चार्ट में है. आई एम वांट टू फर्स्टली कंप्लीट दैट फ्लो चार्ट. आप सभी उस फ्लो चार्ट में रहेंगे. एंड आई हैव जस्ट शोन यू, आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिख दिया है. वेदर यू हैव रिटन इट और नॉट, बताओ भैया. Yes, sir. अच्छा, सेकंड आंसर था फाइनेंशियल डिसीजंस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू प्रोक्योर फंड्स. अगेन सम यूनिट्स आर बीइंग गिवन इन सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस हैज अ बिगर अम्ब्रेला. तो फाइनेंशियल डिसीजंस में यू हैव टू राइट डाउन long term financial management, raising capital, and international finance. These are the 3 units which I will be discussing for CMA USA part 2. तो आप लिखें फाइनेंशियल डिसीजंस में, आप लिखें, you have to write it down, long term financial management, that is given in corporate finance section B, unit 2. Raising capital, corporate finance, section B, unit 3. International finance, corporate finance, unit 6. आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने गलत, they have covered all, but they have not linked that. तो मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट का लिंक लेकर आ रहा हूं. I am giving you the financial link so that from next lecture हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाए. We know that क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे 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 ऐसे. And then I will be discussing with decision analysis. Financial में, financial decisions में first is corporate finance and second is decision analysis. Section C, cost, volume, profit analysis, margin analysis and pricing decisions. तो बेटे ये 6 पार्ट्स हम कवर करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस में. आप लिख रहे हैं या लिखना छोड़ चुके हैं? प्लीज टेल मी. देखो आप बोलते नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है सब चले गए, फिर मैं पढ़ाने में मेरा ना लेवल कम हो जाता है. आप कुछ ना कुछ बोलते रहो, जब मैं पूछ रहा हूं कुछ बोल दो आप. Yes, we are writing. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? देखिए इतनी आवाज आनी चाहिए. यस, ऐसे होना चाहिए. यस Yes, sir. मरी हुई आवाज. यस. नेक्स्ट लिखिए, risk analysis. This is step number, this is answer number 3. Risk analysis, question number 3. उसी के नीचे लिखना है. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने स्लाइड अलग बना दी. Risk analysis, इतनी मैंने हार्डवर्क किया हुआ इन सबको बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और आपको अचानक आधे घंटे में सब कुछ मिल रहा है 1 घंटे में. तो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट. Risk analysis, section D. Within that we will be discussing risk and return. What is risk? When I say risk, it is कि आपने एग्जामिनेशन दिया CMA USA पार्ट 2 का जनवरी फरवरी की विंडो में, ऐसे टाइप ओपन भी हो गया, स्टिल यू आर नॉट कंफर्म कि मैं पास होऊंगा या नहीं, क्योंकि 50% में ऐसे टाइप ओपन होगा, बट यू आर नॉट श्योर. इट मींस व्हेन आई से रिस्क, इट मींस if anything, you know, any variation in your expectations, आप जो सोच रहे हैं, आपने किसी गर्लफ्रेंड को
प्रपोज किया, अब अभी आंसर नहीं आया यस या नो, बट द पॉइंट इज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट, दैट इज नेम्ड एज रिस्क, एंड वी विल बी डूइंग विद रिस्क रिटर्न एंड रिस्क मैनेजमेंट। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज सेक्शन ए। तो ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा, मैं पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कवर करने वाला हूं, देन आई विल बी डिस्कसिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, और उसमें ये कवर करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ दिस, एंड देन आई विल बी डूइंग रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। विद इन रिस्क आई विल बी डूइंग रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करंट रेशियो, ड्यू पॉइंट रेशियो, एंड वी विल एनालाइज कि क्या ये सिम्टम्स हैं, क्या कोविड-19 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, whether this company will be insolvent in coming days, whether this is okay, whether debt equity ratio is proper। आप ये बताइए, ब्लड के एक छोटे से ड्रॉप से हमें पता चल जाता है होमोग्लोबिन का काउंट कितना है। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट you can easily find out with the help of those financial statements, that is the report card of that company, that whether in reality company is doing good or not, whether the wealth will be maximized or not, what is the report of that auditor, what are the accounting standards, how much are the ratios, so that we will cover in financial statement analysis। I think आपने चारों बातें लिख ली हैं, तो लास्ट पॉइंट में आ गए जी, हम धर्म की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट आर एथिक्स, एंड वी आर टॉकिंग टू एथिक्स। मैं आ गया जी एथिक्स में। एथिक्स पे हम सार्बेस ऑक्सले एक्ट करने वाले हैं, यूके भी एक्ट करेंगे, एफसीपी एक्ट करेंगे, एंड एंट्री ब्राइबरी लॉज वी विल बी डिस्कसिंग विद द 4 लॉज। बेसिक एथिक्स, मोरल एटीट्यूड्स की बातें करेंगे, मोरल्स की बातें करेंगे, वैल्यूज की बातें करेंगे, बंटी की बातें करेंगे, बबली की बातें करेंगे। यू हैव टू राइट डाउन एथिक्स। तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, आंसर 4, दिस इज सेक्शन एफ, ये आपका सेक्शन एफ है, एथिक्स। तो फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, एफसीपी एक्ट, यूकेबीए, एंटी ब्राइबरी। अब लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं जी आज के लेक्चर में, बड़ा ध्यान से सुनना। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास अगर होते हैं तो दुनिया आपको सलाम करने वाली है। आप 1000 रीजन दो यार, मेरा एम्प्लॉयर अच्छा नहीं था, मुझे ऑफ नहीं मिला, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरी नई नई मैरिज हुई है, मेरे साथ ये हो गया, लोग मारेंगे थप्पड़ खींच के, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। आप रीजंस मत देना, बिकम अनरीजनेबल। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी यार, वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकती है सीए में, तो आपके पास तो बड़ी सारी फैसिलिटीज हैं, आप कैसी बातें करते हो यार। आप सुनो ना, देखो ना क्या कर रही है ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी। आइए देखते हैं, इसको सुनते हैं क्या कह रही है। वो वीडियो अभी मैंने आई थिंक शायद अटैच नहीं किया, लेकिन ये जो वीडियो अभी दिखाने वाला हूं ना आपको मैं, ये वाला, यही वाला शाहरुख खान का, ये शाहरुख खान का वीडियो है ओम शांति ओम का। मैंने इसका एक डायलॉग ना 1 लाख बार सुना होगा, और उस डायलॉग को सुनने से आई गेट फुल एनर्जी कि यार लाइफ में यही है सब कुछ, आप जो चाहते हो मिल जाता है इफ यू वांट टू फोकस ऑन दैट। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आपने मूवी देखी होगी, बट ये डायलॉग मुझे नहीं लगता कि बार बार आपने कभी सुना। देखते हैं क्या है डायलॉग। अब सुनना जरा वो क्या कह रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। पूरी कायनात
आपको उसको मिलाने में लग जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पूरी कायनात लग जाती है यार। सवाल यह है कि क्या आप उसको दिल से चाहते हो या नहीं। पहले आपका चाहना इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ से अभी तक यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड अप टू दिस एज, जस्ट हैव ए लुक ऑन योर लाइफ। आपने जो जो सच में चाहा आपको मिला। तो अभी आपको सीएमए यूएसए चाहना है, बिकॉज इट विल गिव यू नेम, इट विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, इट विल गिव यू एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो एक बीच में वो जो फिलिंग द ब्लैंक है ना कि यार कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की। द पॉइंट इज दैट देयर इज अ गैप इन बिटवीन that can be fulfilled with the help of CMA USA examination. So you have to be a very passionate for that. Just I want to, again, I want to come on in my slide. I want to share something. So have a look on this, that how I can become Sikandar. जो जीता वो सिकंदर. So you have to become a school going student. आपको you have to become like a school going student. You have to regularly do something, you have to regularly study something, you have to prepare your homework, you have to note down the flow charts. So my first step, my first rule is you have to be a school going student. You have to prepare a class note register every time, every section. You have to prepare 6 registers for 6 sections. And the third is follow highlighter technique. I am following highlighter technique. I am using highlighters. So you should purchase 2 highlighters, yellow and orange. And you should highlight that. You have to note down that, And the last is positive thoughts. You should have positive thoughts. There is a negativity also. I agree with that. I still get so many negative emotions, negative thoughts. But the point is, you have to again, you have to charge up again. You have to start again. Shut the past. Being present, being present, being present. When you give 100%, you will be getting 100%. So with all these thoughts, I will be starting with, I will be showing you my own juice notes. So how we will be studying, how we will be taking these lectures. The first point is you should have one study material, either Hawk or Glemm or Wiley or Becker, hard copy. And second is I will be sharing juice notes, and you should have hard copy of that juice notes. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, juice notes plus, one Hawk, either Glemm or Wiley, as the case may be. Because I will be discussing with the concept, I will be discussing the flow chart, with the mock test, with the handwritten slides, more than your expectations. Let's have a look on my juice notes. Let's have a look on my juice notes, that how I have prepared my own juice notes. Just देखिएगा जरा. These are my juice notes. Just have a look on that. And this is the mixture of Wiley, Becker, Hawk, Glemm. Badam Rogan बनाया, CMA USA Part 2 juice notes. I'm a qualified chartered accountant. I'm a qualified company secretary, qualified cost accountant. और भी बड़े सारे डिग्री ऐड हो गई हैं. I have not written book, काफी पीरियड हो गया तो अभी, I'm mainly concerned कि आपको best quality दूं. These are the testimonials, तो देख लेंगे. The point is, this is the index which I have prepared. As per my juice notes. अभी मैं आपको हॉक भी दिखा रहा हूं. This is section A, financial statement analysis. This is section A. This is section B, corporate finance. In section A, there are 4 units. In total, there are 17 units. In CMA USA Part 2, there are 6 units in this, section B.
and there are 3 units in section C, 1 unit in section D, and this is section, this is section E, this is section D, and there are 2 units. There are 2 units inside this section E and 1 unit in this. Total 17 units, sir, which I have just shown you also. And just have a look on these juice notes. I have prepared very beautifully, and I have written the concepts. मैंने क्या किया? I have divided all the sections, all the units into concepts, which you will enjoy. For example, in section A, in unit 1, I have divided into 5 concepts. What is financial statement analysis? What are financial statements? What are the formats of that? What is common size analysis? What is common size statements? So मैंने क्या किया? I have divided all those into different small concepts, and then the flow charts. Because with the help of flow charts, आपको ज़्यादा idea लगता है यार. And these are the things like this. I have prepared very beautifully all the concepts, and then we have written, so many types of objective type questions also, so that you can practice it. And then I will be referring with Hawk, because we are the partners of Hawk. So no doubt we will be preferring Hawk. But even if you have Glen, Wiley, or Hawk, as the case may be, my main concern is that I want to clear your concepts. वो clear हो जाएगा, आप tension मत लेना. This is, the same point which I have just shown. This is section A. This is section B. Section B. This is section C. Decision analysis. Like this, there are 6 sections and 17 units. And firstly, I will be starting from section B, unit 4. Then section E, investment decisions. Then section B, unit 5. Then section financial decisions. Section B, unit 3, 2 and 3. Because they are interlinked. So let's start. Let's start with the journey. And this is a very beautiful journey which I'm going to start with you. आप सभी कुछ शेयर करना चाहे तो you can share in case you want to share. Otherwise, I'm changing the screen. अभी तक कुछ भी पूछना है, you can ask me. अभी तक कैसा लगा सेशन? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं from these live sessions? देखिए, डिटेल्ड पूरा तो नहीं हो पाएगा. I will try my level best, but still, because we have some time limitations, so I will be covering, I will be covering part 2 within, I will be taking 18 to 20 sessions to complete this full section, this part 2, because there are 6 sections, which I have completed in my recorded lectures in 300 hours plus. But because it is revisionary, but still I will be trying my level best to give you as much as you can. So, as you expect. So please tell me something about your expectations, the feedback up to this point. Then we start with again. Any feedback you want to say? Any add-on? Any expectations in regard to these live sessions, so that we can, proceed? I am waiting. Yeah, Chinmay, please tell me. Yeah. Sir, your classes is very beautiful, sir. But I am suffering from Hindi, sir. I did Telugu states for some people. Okay. So I will try my level best to speak more in English, but still sometimes, because it is a mother tongue, sometimes, for example, while speaking English, sometimes you automatically, subconscious mind automatically shifts to Hindi. But again, I will try my level best to speak more in English. But I think you must be getting something in Hindi also. Some point you are understanding Hindi, or you are not understanding Hindi at all. Yes, sir. No, Chinmay, I want to say you that whether you are not understanding Hindi at all, or you are understanding a little bit. Little bit, sir. Little bit. Okay. I will try my level best to have more component of English. Okay. Thank you. Yeah. Any other feedback or any other value addition or anything, any expectations you expect from these live sessions, so that I can inbuild in coming sessions. बताइए जी, कुछ बताना चाहें तो.
Basic concept, sir. Great, great. You want the basic concept. Okay. Great. I will see to it, and I will try my level best to fulfill your expectations, so that you can feel a difference, yeah, that what is reality, the concept, what are the things, which you should be aware of. It is an MCQ paper. You, until and until your concepts are crystal clear, you will not able to answer there that, and your asset type window will not open. You getting your point? तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. आज थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं. आप हेडिंग लिखें सेक्शन बी, कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 4, as I have just told you, and within unit 4 I am doing working capital. Okay, today I will be sharing my juice notes along with this video, because we are uploading this video on the YouTube also. So you should download that, juice notes, and you should get that hard copy within 1 or 2 days. If it is possible, then by tomorrow, because tomorrow again we have a class. Otherwise, by the next Friday, you should have a hard copy of these juice notes, because that will help you a lot. And if you have any study material, Hawk or Glenn, you should get a hard copy of that also, because I will be referring something from Hawk, I will be referring something from juice notes. So if you have that hard copy, it will be helping you a lot, along with the highlighters. Getting your point? Just have a look on this. My hard copy, I have written so many, I have used so many highlighters in this. Just have a look. So you should have a hard copy. Okay? Working capital. Just write down. When I say a working capital, it means, first point likhiye, those working capital is life blood of any organization. Working capital is current assets minus current liabilities. Working capital is those funds required for day-to-day working. I have written 3 points in respect to working capital. I will explain it, but just write down. Working capital is the lifeblood of any organization. Working capital is current assets minus current liabilities. Working capital is those funds required for day-to-day working. Day-to-day working. Those funds which are required for day-to-day working are named as working capital. When I say working capital, as a management accountant, I am a management accountant. I am a CMA USA. And as a management accountant of a company, I am a management accountant of Apollo Tires. You have heard of Apollo Tires? I am a management accountant of Apollo Tires. I want to see that how much funds Apollo Tires require to run its show, day-to-day show, daily show. That is how much funds they require for, or how much funds will be invested in current assets. And how much funds can be borrowed
from current liabilities. And when I say current assets minus current liabilities, it is net working capital. Just think of a tea stall. मैं आपको एक example, I am just giving you an example of a tea stall. Can you tell me something about what are the examples of working capital funds required for a tea stall, for running a tea stall? What all is necessary? And what do you say for running a tea stall? I require a shop. There is a requirement of a shop. There is a requirement of utensils. There is a requirement of tea leaves, sugar, milk, water, tea bags, small cups. So many other things are being required. आप सबको मालूम है that what are the things which are required for running a tea stall? So can you tell me, out of all that, what do you think for running a tea stall, that these are the working capital expenses, these are the running expenses, these are the long-term expenses, and these are the short-term? What do you think? आपको क्या लगता है? What are capital investments in that, and what is working capital investments? Please tell me something about this if you have any idea. So all those expenses which are being for milk, for water, for tea bags, sugar, for tea cups, all that is working capital. अभी मैं आपको I will be showing one video of Kingfisher Airlines. Because of working capital problem, that company flunked like anything. And all that, this utensils, that is a capital investment. That furniture, that gas stove, gas cylinder, all these will be regarded as long-term investments. So firstly, I will be doing today that what I mean by working capital investments, and I want to manage that. So when I say working capital management, I want to answer one question: how much funds are required for working capital? This is a question which I will be answering in the next session, and this is your homework. First homework is you should get the hard copy of Hawk, Glam, Wiley or Becker, as the case may be. Second homework is you should get the hard copy of my juice notes.